हेलो फ्रेंड, वेलकम टू 28 जून 2021 न्यूज एनालिसिस। तो पहला देखेंगे हम लोग कितना आर्टिकल्स है। तो पहला जो आर्टिकल्स है अबाउट द न्यूक्लियर साइट इमेज वोंट बी शेयर्ड विथ IAEA, जो कि ईरान ने बोला। द फिर द सेकेंड आर्टिकल है द पावर ऑफ एन एपोलॉजी। फिर थर्ड आर्टिकल है ऑन द margins with a full equality is still out of reach. Fourth article, the government face a tough choice on interest rate. Fifth article है about countering the next wave of the COVID-19. Sixth article है court hand over victim to relative of accused. Seventh article है 4081 houses built by कॉर्पन अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना। लास्ट में प्रीलिम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियर साइट इमेज वोंट बी शेयर्ड विथ IAEA ईरान। IAEA क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, एजेंसी। ठीक है, तो IAEA जो कि द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट द पीसफुल यूज़ ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी। पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, बैन नहीं करता न्यूक्लियर एनर्जी को। इनहैबिट द यूज ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनी मिलिट्री पर्पस। और फिर उसके बाद ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, 29 जुलाई 1957 में बना है। एस्टैब्लिश इंडिपेंडेंटली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, IAEA से स्टेटस मिला हुआ है। फिर स्टिल रिपोर्ट्स यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबलीज एंड सिक्योरिटी काउंसिल। ऑफिस हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, रीजनल सेफगार्ड ऑफिस टोरंटो कनाडा एंड टोक्यो जापान में है। फिर उसके बाद लाइसेंस ऑफिस न्यूयॉर्क में है, जो कि यूनाइटेड स्टेट एंड जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। लेबोरेटरी एंड रिसर्च सेंटर भी है इसका। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है? इंटरनेशनल गवर्नमेंट फोरम है फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशंस, पीसफुल यूज ऑफ द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर पावर। फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ पीसफुल एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी and science and technology, provide international safeguard against misuse of nuclear technology and nuclear materials, promote nuclear safety, radiation protections and nuclear security standards and their implementations। मेंबर कौन कौन सा है? IAEA का 173 मेंबर है। अप्रैल 2021 में बनाया, मतलब कि तक में 173 मेंबर है। इंडिया बिकम मेंबर इन 1957 इटसेल्फ में मेंबर बन गया है 1957 में ही। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला जो स्टेटमेंट है, द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी is an international organization that seeks to ban the use of nuclear energy and to inhibit the use of any मिलिट्री पर्पस इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स। नहीं, ये बैन नहीं करता है, ये बस इंश्योर करता है कि पीसफुल यूज़ ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी हो। ठीक है, फिर सेकंड जो स्टेटमेंट है, दैट इज़ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू अ यूनाइटेड नेशन स्टैट्यूट। तो ये यूनाइटेड नेशन स्टैट्यूट से नहीं इस्टेब्लिश हुआ है, ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड जो स्टेटमेंट बोल रहा है, वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट्स टू बोथ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। ये बिल्कुल सही है, वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को भी रिपोर्ट करता है, सिक्योरिटी काउंसिल को भी रिपोर्ट करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो बी हो जाएगा 3 ओनली करेक्ट।
नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है अबाउट द पावर ऑफ एन एपोलॉजी, इससे रिलेटेड पहले में क्वेश्चन पूछ सकता है और जीएस पेपर 1 में क्वेश्चन पूछ सकता है एज अ हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड which include events from 18th century such as colonizations, decolonizations, and their forms and effect on the society. एथिक्स में क्वेश्चन पूछ सकता है एज एथिक्स इशू इन द इंटरनेशनल रिलेशन एंड फंडिंग. बैकग्राउंड क्या है कि जर्मनी हैज अपोलोजाइज्ड टू द नामीबिया फॉर द मैसेकर्स ऑफ द हीरोज एंड Herero and Nama people in 1904 to 1908. France apologized to Rwanda for its role in the Rwandan genocide. Canada apologized before the descendants of the passengers of the Komagata Maru ship. France refused to apologize for its act during the 1954-62 Algerian War of Independence. Turkey refused to apologize for its role in the Armenian genocide during the 1915 to 1923. Should a nation apologize for the crime of its past? Former Australian Prime Minister John Howard opposed the idea of apologize. Today's generation cannot be held accountable for the behavior of their predecessor. Current generations did not actually commit the crime. Many still reap the rewards of a colonial world. Example: descendants of the white settler, the disproportionately privileged compared to the conquered people. Way forward क्या है कि acknowledge that the current generation did not do wrong but their state did. Political leaders as representative of the state should apologize on behalf of the state if violence were committed by the state. Cannot be assured that the same state that perpetrated the crime remain intact today. Example: Turkey was not established till 1923 when the Armenian genocide occurred. Intergenerational injustice is complicated by our multicultural society. Example: can a French citizen of Algerian descent apologize for the French colonial atrocity in Algeria? Positive effect of such gesture strengthen the relation between the country and world. Compensations for the descendant of the genocide victim will help people, especially the survivor, reconcile with the past. It would avoid similar tragedies in future. Needed as many leaders still persecute their own peoples to remain in power. Example: Rohingyas in Myanmar, Yazidis in Iraq, and Uyghur Muslim in China. अब इससे रिलेटेड जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 4 में क्वेश्चन पूछ सकता है एज अ फ्यू ईयर्स बैक फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ फॉर्मली apologized for its colonial crimes. In this context, do you think that the nation shall apologize for the crime of its past? On migrant with a full equality still out of reach. इससे रिलेटेड पहले में क्वेश्चन पूछ सकता है और जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिग्निफिकेंट प्रोविजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर
government policies and intervention for development in various sectors and issues arising out of this design and implementations, welfare schemes for vulnerable section of the populations by the central and the state. Role of judiciary: constitutional courtroom, space for individual and state to converse with each other. Judgment favor of query community. Navtej Singh Johar versus Union of India, case 2018. Section 377 of the Indian Penal Codes, consensual homosexual behavior between the adults. जजमेंट क्या बोला कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल इरेगुलेशंस irrational, unconstitutional, irrational, indefensible, and manifestly arbitrary, remarkable steps for an Indian individual in his quest for identity and dignity. Launch pad for the LGBT jurisprudence and query liberations movements in India. Naj Foundation versus Government of NCT of Delhi. Section 377 Creation of an unreasonable classification and target homosexual as a class. Section offends the guarantees of equality that is enshrined in Article 14 of our Indian Constitution. Despite such a judgment, the query communities is still a long way to attain full equality, empowerment, health, and personal relationship. सेम सेक्स मैरिज जो कि सेंटर रिस्पॉन्स LGBT community activist and couples oppose any more move to accord legal sanction to a same-sex marriage in India. The discrimination of a Section 377, the decriminalization of Section 377 of the Indian Penal Code does not automatically translate into the fundamental right for the same-sex couple to the marriage. ठीक है, फिर जजमेंट बोल रहा है कि ओबरजीफेल वर्सेस हॉडजेस केस 2015 में, जो कि यूनिवर्सल ह्यूमन राइट फॉर मैरिज शुड नॉट बी डिनाइड टू द सेम sex couple. Emotional and social values of institutions of marriage 2021. Same-sex marriage is legally performed and recognized in 29 countries. Article 15 cornerstones of the concept that equality is secure from the every sort of discrimination, religious, race, caste, sex or place of birth or any of them. Author बोल रहा है कि expanded by the including gender and sexual orientation. Example South Africa and United Kingdom. Way forward बोल रहा है कि need take initiatives to reduce and eliminate the stigma associated with LGBT community through the mass media and the official channels. School and university students should also be sensitized about the diversity of the sexuality. Conclusion बोल रहा है need for the Indian states to enact a law to do justice to the pioneer and sexual conscience.
फिर जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछता है इससे रिलेटेड कि डिस्पाइट जज जुडिशियल वर्डिक्ट्स इंडिया सेक्सुअल minorities face discrimination in employment, health issues and personal right discuss. अब नेक्स्ट जो आर्टिकल्स है अबाउट द गवर्नमेंट फेस टू टफ चॉइस ऑन इंटरेस्ट रेट। तो न्यूज़ क्या है कि क्वार्टरली resets of interest rates on a small saving schemes in due of 30th June. A small saving scheme, a set of saving investment launched by the government of India. Example: public provident funds, national saving certificates, and senior citizen saving schemes, and Sukanya Samriddhi schemes, etc. Popular with a fixed income investor offer a much higher interest rate than a bank fixed deposit. Lowering the interest rate will help the government reduce cost, will hurt senior citizen and the middle class. Common people already suffer from the inflations. Retail inflation was 6.2% through 2020-2021. Inflation is expected to be stay around 5.5 to 6 through 2021 to 22. Rising inflation, declining saving rate and loss of income distorts plus fall in the small saving rate discourage the small investor. Small saving a key source of finance the government deficit. In 2021-2022, borrowing through a small saving paced at rupees 3.91 lakh crore. Public Provident Fund (PPF) इंट्रोड्यूस इन 1968 में ही इंट्रोड्यूस हो गया था PPF, ठीक है, टू मोबिलाइज अ स्मॉल सेविंग इन द फॉर्म ऑफ investment coupled with a return on it. Interest earned on public provident funds is tax free. Tenure from 15 years and can be extended for 5 years. Subscriber can make one withdrawal during a financial year after the 5 years, excluding the year of account opening. Amount of withdrawals up to 50% of a balance at the credit at the end of the fourth preceding year at the end of the preceding year, whichever is low. ठीक है, तो consider the following statement regarding the Public Provident Fund (PPF). It was introduced with the first time in Budget 2021. नहीं, ये तो 1968 से ही चला रहा है, ये गलत है। फिर सेकंड बोल रहा है कि द इंटरेस्ट अर्न इन PPF फंड इज टैक्स फ्री। बिल्कुल सही है, टैक्स फ्री रहता है, लेकिन जो हम लोग बैंक में सेविंग रखते हैं उसमें उसके इंटरेस्ट पे टैक्स लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल्स अबाउट द काउंटरिंग द नेक्स्ट वेव ऑफ कोविड-19, तो इससे रिलेटेड पहले में क्वेश्चन पूछ सकता है, और जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ सकता है अंडर द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन द वेरियस सेक्टर एंड इशू अराइजिंग आउट ऑफ दिस डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशंस, issue relating to the development and management of the social sector service related to the health, important aspects of the government limitation and potential
मॉडल सक्सेस। ठीक है, तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ यह है कि स्टेट प्रिपेयर्डनेस टू मैनेज द possible third wave of COVID-19, provide a real-time analysis of our data, few suggestions and strategies for effective management. Delay administration policy respond. In January 2021, first wave subsides the need of hospitalization of COVID-19 patients fell drastically. Delhi administration was using less than 20% of its bed capacity. In February 2021, Delhi government reduced the bed capacity to the level of just about 500. In March 2021, the health system collapsed. The increase in the number of COVID-19 cases hit the second wave of the pandemic. In April 2021, bed occupancy went to 33% to over 90%. Government increased beds capacity could not keep the pace with the rise of the COVID cases. In May 2021, utilization of government hospital beds went rapidly back to the 30%. Many other areas in the country were experiencing a rise in the case. तो इन्फ्लुएंस क्या है, यहाँ से हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि COVID-19 waves requires the health infrastructure to be elastic. Demand for the COVID-19 specific health infrastructure is spatially varied. Health capacities at the fixed location will not be sufficient cover the deficiency that the several administrations is the country face. Hard to increase the capacity in response to the key kind of surge in April 2021. Key health infrastructure don't exist in the all area in our country. Real-time analysis of data. 145 districts account for 75% of the cases during the first wave. The same accounts for the 80% of the cases during the second wave. Permanently at the risk disaster district that were hit by the first wave affected in the second wave to a great extent. Population size, density, mobilities and then prone to the rapid spread. Need क्या है कि reserve capacity and resource to be expand, prevent any rise, any risks associated with the possible third wave. सजेशन क्या बोल रहा है कि सजेशन बोल रहा है कि mobility framework capacity to move health care facility from one area to the another. Identify what resource can be moved based on the mobility cost and supply elasticity. Policy innovations in a third area. Personal management in inducting trained final years medicines and nursing students, rehiring of retired medical personnel use paramedical worker. Resource with a high mobility cost need to be evenly distributed. Ensure the quality is in the excess of the poorly served area. Special equality. Expanding the health infrastructure cover all regions. Providing accessibility through enhancing the regional and area connectivity. Lead to the sharing of resources within the countries. Reduce inaccessibilities and inequity. ठीक है.
अब इससे रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है जीएस पेपर 2 में कि एन इलास्टिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर नीड ऑफ द आवर टू एनहांस द equity and the accessibilities. Discuss. The next article say about the court hand over victims to relative of accused. तो जो accused था उसी का relative को active ये hand over कर दिया rape victim का. ठीक है. तो इससे रिलेटेड देख लेते हैं क्या क्या आर्टिकल्स में है. तो a minor rape victim reports decision of the local court to hand over a minor rape victim to her local guardian who happened to be the relative of the accused. Accusation क्या बोल रहा है कि refusal to let the member of the local children's care institution in while hearing the girls who is a possible victim of the child trafficking from Nepal. POSCO जो कि Protections of the Child for a Sexual Offense Act 2012 enacted protect the children from offense of sexual assault, sexual harassment and pornography. Provides establishments of the special court for the trial of such offense. Act general gender neutrality defines difference from the sexual abuse is ensuring the penetrative and non-penetrative assaults as well as sexual harassment and pornography. Sexual assault जो कि aggravated under the certain circumstance. Abused child is mentally ill or well the abuse is committed by the person in a position of trust or authority. ठीक है. इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लो. इन द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट campaigners the introduction of the protection of children from sexual offense. POSCO Protection of Children from Sexual Offense Act 2012 Ministry of Women and Child Development का ही कैंपेन है. ठीक है. The act has been enacted to protect only females and female मेल दोनों है. ठीक है. और थर्ड बोल रहा है द एक्ट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्पेशल कोर्ट ऑफ ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर द एक्ट बाय द कीपिंग द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड एज paramount importance at the very stage of the judicial process. फिर बोल रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट. तो 1 and 3 करेक्ट है. सी आंसर हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट जो आर्टिकल है प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में. अब क्वेश्चन देख लेते हैं. तो आइए तो पता ही है वो बैन नहीं करता है, बस पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी करता है. ठीक है. ये कोई एस्टेब्लिश अंडर यूनाइटेड इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है. आईए रिपोर्ट्स बोथ टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल. ये बिल्कुल सही है. प्रोविडेंट फंड्स 1968 में बन गया था. ठीक है. ऑब्जेक्टिव टू मोबिलाइज अ स्मॉल सेविंग इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट. इसमें इंटरेस्ट फ्री रहता है, टैक्स फ्री रहता है. ठीक है. पॉस्को वाला जो है वो फीमेल और मेल दोनों के लिए. ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के अंतर्गत में आता है. अब मेंस का क्वेश्चन देख लो. ये जाके प्रैक्टिस करना कि फ्यू ईयर बैक द फर्स्ट
time in its history, the British government has formally apologized for its colonial crime. In this context, do you think that the nation shall apologize to the crime of its past? फिर बोल रहा है despite judicial verdict, Indian sexual monitors face discrimination in employee health issues and personal right discuss. फिर बोल रहा है 3 में can elastic health care infrastructure is needed for the hour to enhance the equity and accessibility decision. Please like, subscribe and share the video. Thank you. Bye.